chapter number 7, things around us, and we have to discuss the difference point between living thing and next one non-living thing. How living thing and non-living thing are different. Okay, so for that there are some characteristics, and I think yesterday we have discussed the two characteristics. Okay, so for that there are some characteristics, and yesterday we have discussed the two characteristics. Which one is the first characteristic? Living thing having structural organization. Yes, that one is also called cellular structure. So the first characteristic, that is living thing having the structural organization. Structural organization. Living thing having the structural organization, or living thing is made up of cellular structure. Living thing की बॉडी किससे बनी है? Made up of cellular structure. Okay, yesterday at the ending, some 9th standard parents came to my class. That's why last 5 minutes I have not taken. Okay, so structural organization. So what is the meaning of structural organization? कैसा है living thing का structure? उसमें क्या क्या है? So first one, the cell is the basic smallest structural functional unit of all living things. Okay, now group of cell, that is called tissue. Okay, बहुत simple definition होगी. Group of cell, that is called tissue. Now next one, group of tissue. Okay, group of tissue, that is called organ. Group of organ, that is called organ system. Okay, that one is called organ system. And organ system, there are the different systems are present in the body of organism. Okay, plants are organism, animals are organism. Okay, so yes, okay, organisms. So cell, group of cell, that is called tissue. Group of tissue, that is called organ. Group of organ, that is called organ system. And organ system is present in the organism. Okay, so a group of similar cell that perform the same function is called tissue. For example, skin is tissue, xylem is tissue, phloem is tissue, blood is tissue, bone is tissue, and so many. Okay, now next one, group of similar tissue. Okay, group of tissue that perform the particular function, that is called organ. For example, heart is organ, lungs is organ, kidney is organ, stomach is organ, and so many examples. Now group of organ, it make the system. For example, digestive system. So how system is formed? उसमें क्या है? different organ है, group of organ. ओके, ऑर्गन का एक पूरा ग्रुप बन गया, उसने एक क्या बनाई? सिस्टम. ओके, एंड व्हेन टू और मोर सिस्टम्स आर प्रेजेंट okay in the body of organism, then next one, that is cellular structure. So on the basis of number of cells, okay, on the basis of number of cells, organism is again classified as unicellular, and next one is multicellular. Okay, unicellular, and next one is multicellular. Those organisms having single cell or only one cell, that organism is called unicellular. And yesterday I have given the homework to you, that is make the list of unicellular or download the diagram of unicellular. But आप में से बहुत से बच्चे लेजी है,
उन्होंने अब उनका होमवर्क किया ही नहीं, बराबर है। आपको डायग्राम भी ऑब्जर्व करने को बोला था मैंने, सो आपने किया नहीं होगा ऐसे समझ के मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे कुछ इमेजेस शेयर कर दिए, वेरी शॉर्टली डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स मैंने ग्रुप पे, कम से कम वो तो भी देखो। ओके, आपने होमवर्क नहीं किया होगा तो ग्रुप पे मैंने जो शेयर किया है वो भी आपको कंपलसरी देखना है। रेडीमेड स्पून फीडिंग किया है, रेडीमेड स्पून मैंने ढूंढ के निकाल के दिए हैं, आपको सिर्फ देखो अच्छी से ऑब्जर्व करना है। ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप का दिया है। देन नेक्स्ट वन मल्टी सेल्यूलर के एग्जांपल दिए हैं, यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर का डिफरेंस बताया है, डायग्राम्स बताए हैं, एटलीस्ट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो भी आपको कंपलसरी देखना है, एग्जांपल्स लर्न करना है। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके ग्रुप पे शेयर किए हैं। Clear? Is it okay, my dear students? Okay, so understand the first point, that is structural organization. In short, living body is made up of cellular structure. A living thing having single cell, that is called unicellular. For example, amoeba, paramecium, euglena, chlorella, bacteria, yeast, chlamydomonas. Okay, are the examples of unicellular. Okay, and some unicellular we see with our naked eyes, and most of the unicellular which we cannot see with our naked eyes. For that we need the instrument, and that instrument is called microscope. Okay, that instrument is called microscope, and when we keep the slide under the microscope it magnify the image. माइक्रोस्कोप में क्या यूज होते हैं, लेंस यूज होते हैं, लेंस जैसे कैमरा में लेंस होते हैं। ओके, लेंस यूज होते हैं, एंड इट वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। माइक्रोस्कोप कैसे वर्क होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज मैंने कोई स्लाइड रखी, उसके ऊपर लाइट फॉल डाउन होता है, एंड लाइट नीचे के लेंस पे रिफ्लेक्ट होता है, फिर से रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाता है, एंड हमें ऊपर के लेंस से इमेज मैग्नीफाई होके दिखती है। ओके, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्मॉल बट हमें थोड़ा मैग्नीफाई होके वो दिखता है। माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, जहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं वहां पे एक, एंड अपर के साइड पे। कैन आई शो यू माइक्रोस्कोप? कैन आई शो यू? बट जो स्लाइड से वो मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि एडजस्ट करना होता है ना। एक दिन आप इसको ट्यूशन क्लास से तो स्लाइड भी ऑब्जर्व करें। संडेला एक्स्ट्रा बोलवतो. Okay, so such type of device is called microscope. Okay, ये जो है ये क्या है, माइक्रोस्कोप है। एंड माइक्रोस्कोप में यहाँ पे क्या होता है, लेंस होते हैं, एंड यहाँ पे भी क्या होता है, लेंस होता है। एंड जहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस। दिस वन इज लेंस। देन हियर देखो, मैंने बोला ना रिफ्लेक्शन होता है, तो लाइट यहाँ पे फॉल डाउन होगा, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ से फिर से लाइट, ये जो लेंस है यहाँ पे जाएगा, एंड फिर से लाइट रिफ्लेक्ट होके हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, सो माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एंड ये जो माइक्रोस्कोप है ये लाइट माइक्रोस्कोप है, इसीलिए इसमें मिरर भी दिया है। आपको दिख रहा है सबको मिरर? ओके, तो ये मिरर पे लाइट फॉल डाउन होगा, एंड लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ओके, एंड हियर नॉब्स आर गिवन फॉर एडजस्टमेंट। ओके, यहाँ पे नॉब दिए हैं, नॉब की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ सपोज मुझे अमीबा की स्लाइड देखनी है,
तो टू टाइप होते हैं, एक तो हम ओरिजिनल स्लाइड बना सकते हैं और सेकेंड वन दैट इज ऐसे परमानेंट स्लाइड मिलते हैं। सो दिस इज द स्लाइड ऑफ किडनी। ओके, मैमल्स के किडनी की स्लाइड है ये। ओके, ये परमानेंट है, ये ऑलरेडी मैंने परचेस की है मार्केट में से, बट कोई कोई स्लाइड हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओनियन है, ओनियन का जो पील है उसका जो ट्रांसपेरेंट निकलता है वो लेते हैं, स्लाइड पे रखते हैं, उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं, ऊपर कवर स्लिप रखते हैं, तो वो मैंने खुद बनाई। दैट वन इज टेम्पररी स्लाइड एंड दिस वन इज परमानेंट स्लाइड। इसको ग्लू से चिपका दिया है, स्टिक से, ये परमानेंट बनाई है। स्लाइड्स आर ऑफ टू टाइप, टेम्पररी भी एंड परमानेंट भी। सो ऐसे बहुत से परमानेंट स्लाइड मैंने परचेस किए हैं। ओके, सो टू ऑब्जर्व, ओके माय पॉइंट इज, हमारा यूनिसेल्युलर पॉइंट चालू था। ओके, सो टू ऑब्जर्व द यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी नीड द इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। नाउ मेरे पास और एक माइक्रोस्कोप है, बट वो थोड़ा बेसिक है, थोड़ा सिंपल है। उसकी हम बोलते हैं ना पावर, पावर उसकी पावर कैसे है, लेस। ओके, टू मच बेसिक है, जो कि हम फ्लावर्स के पेटल्स, क्रिस्टल्स, ओके उसके लिए यूज करते हैं। ये है सिंपल बेसिक माइक्रोस्कोप। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही लेंस दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू माइक्रोस्कोप? ये माइक्रोस्कोप में यहाँ पे भी लेंस है, ऊपर भी लेंस है, एंड ये टू लेंस है मीन्स पावर डबल हो गई। एंड ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें मिरर है एंड सिर्फ एक लेंस दिया है, यहाँ पे एक लेंस रहता है। सो दिस इज द बेसिक माइक्रोस्कोप। उससे थोड़ा अच्छा ये वाला माइक्रोस्कोप है। ओके, सो दीज आर द डिवाइस which is used to see the different small microorganism and other things which are very very small, we cannot see with our naked eyes, then we are using the microscope. हमें सेल देखना है, टिश्यू देखना है, okay like this. For the detailed study we are using the माइक्रोस्कोप। हम खुद भी स्लाइड बना सकते हैं, उसको मैंने अभी बोला टेम्पररी स्लाइड। सपोज मुझे सेल देखना है, अपना जो चिक है, चिक के अंदर का, अंदर भी सेल्स रहते हैं, वो सेल हम एनिमल सेल बोल के देख सकते हैं। नहीं तो ओनियन का पील निकाल के उसको ऐसी, अभी मैंने बताई ना, स्लाइड पे रख के हम टेम्पररी प्लांट सेल की, प्लांट सेल ओनियन की निकाली तो किसकी होगी, प्लांट सेल। मेरे चिक सेल लिए मैंने स्टडी करने के लिए तो एनिमल सेल्स। ओके, एंड वी ऑब्जर्व, तसं नाही, एक घेतात आणि काढतात सांगते मी नंतर. ओके, सो अंडरस्टैंड अबाउट द माइक्रोस्कोप। हैव यू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोप? एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हाँ आप इसको कोई और नाम देंगे, इसीलिए मैंने आपको, यू शुड नो अबाउट द माइक्रोस्कोप, क्योंकि कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मम्मी पापा में एकदम इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। दैट इज विच डिवाइस इज यूज्ड टू सी द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन आई हैव अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, और एक माइक्रोस्कोप है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये अगेन थोड़ा, नो बेटा ये मैंने परचेस किया है श्रेया। ओके, अगेन दिस वन इज आल्सो माइक्रोस्कोप। ओके, ये जो माइक्रोस्कोप है इसकी लेंस यहाँ पे 1200x का है, देन 100x का है, देन 400x का है। ओके, इसकी पावर हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पिक्सेल्स। ओके, उसकी पावर सी 100x, देन नेक्स्ट जो लेंस है 400x का है, एंड देन नेक्स्ट लेंस जो है वो 1200x का है। देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे लेंस लगाया है। ओके, यहाँ पे एक लेंस है, एंड ये जो है इसके एंडिंग में और एक लेंस है, दो लेंस लगाए हैं। एंड नेक्स्ट वन, आप बोलेंगे इसमें तो मिरर नहीं है, बट मिरर के जगह पे उन्होंने यहाँ पे लाइट दिया है। ओके, मिरर के जगह पे यहाँ पे एक एलईडी लाइट फिक्स किया है। ओके, ये जो है इसमें डायरेक्टली मिरर दिया है, मिरर के ऊपर सनलाइट फॉल होता है। एंड ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें मिरर नहीं बट एलईडी लाइट दिया है, सेल गए होंगे। यस, ओके देखो उसके पीछे सेल है, सेल की वजह से क्या होता है, ये जो
एलईडी लाइट है ये ऑन होता है, एंड लाइट की वजह से यहाँ पे जो देखो अभी मैंने स्लाइड रखी है, ये स्लाइड हम देख सकते हैं जूम करके। ओके, और ये जो है ये नॉब है, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस वन इज आल्सो माइक्रोस्कोप। देखो ये भी एक माइक्रोस्कोप है, देन दैट वन इज आल्सो माइक्रोस्कोप। इज इट ओके, अंडरस्टैंड? लाइट माइक्रो, दोनों माइक्रोस्कोप कौन से, तीनों माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप है। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप है। हेलो, तो बोला ना, बर चालेल, बर चालेल. So, is it okay? You have seen microscope? Okay. So, our point is, अपना point कौन सा चालू था? Unicellular microorganism. Okay, unicellular, and next one that is multicellular. Okay. बेटा ये जो माइक्रोस्कोप है ना, हम संडे साइंस स्कूल में, दोनों अच्छे, दोनों बेटर है बेटा। माइक्रोस्कोप के 4-5 टाइप है, एक टाइप नहीं, इसके अलावा भी टाइप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, नहीं मेरे पास इतनी। ओके, सो नेक्स्ट वन यू हैव, ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सो understand first characteristic of living thing, that is living thing body is made up of cellular structure. Okay, on the basis of number of cell, unicellular, multicellular. Example of multicellular is, which one is the example of multicellular? Yes, plants, human being, all animals, okay, are the example of multicellular. Now second characteristic, which also we have discussed yesterday, that is living thing need the food. Okay, the second characteristic है वो भी हम yesterday discuss कर लिया था, living thing need the food. Okay, living thing need food. जिनको जिनको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, ओके, मैं आपको दे सकती हूँ। एक्चुअली ये हम संडे साइंस स्कूल में हायर स्टैंडर्ड के जो 9-10 की जो लास्ट लेवल है, 4th लेवल, उनको हम माइक्रोस्कोप देते हैं। 2 रोबोट्स है, ओके, एंड बहुत से है इलेक्ट्रॉनिक्स के, सोल्डरिंग के डिवाइसेस, जो लास्ट लेवल है संडे साइंस स्कूल। देखो संडे साइंस स्कूल के 4 लेवल है, जूनियर जो कि 4th-5th के लिए है, देन इंटरमीडिएट जो कि 6 के लिए है, 7th-8th के लिए लेवल 1 है, एंड 9 के लिए लेवल 2 है। तो लेवल 2 में हम माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स को देखते हैं, माइक्रोस्कोप, सोल्डरिंग की, देन 2 रोबोट बहुत से उसमें, बाद में बताऊंगी बेटा, मुझे देखनी पड़ेगी। क्या आपको चाहिए होगा तो मैं आपको लाके दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नेक्स्ट वन दैट इज लिविंग थिंग नीड द फूड। इसका अनदर नेम क्या है, मैंने कल आपको बताया था, न्यूट्रिशन। ओके, अनदर निकनेम इज न्यूट्रिशन। सो ऑल लिविंग थिंग नीड द फूड फॉर द सर्वाइवल, टू ऑब्टेन द एनर्जी फॉर द ग्रोथ. ओके, all living thing need the food. So in the living thing again there are plants and animals. So plants are called autotrophs, okay, because make their own food. Plants are also called producers, and plants make their own food by the process that is called photosynthesis. Now animals are called heterotrophs, do not make their own food, it is depend on the plants and animal, and it is also called consumers. Okay, इसको और क्या बोलते हैं, consumers. Now next characteristic of living thing, that is living thing grow. Okay, living thing grow. Next characteristic, have you seen the growth in living thing?
Again, living thing में हमें दोनों living डिस्कस करना है. That is plants, and next one that is animals. Okay, so living thing, in the living thing, plants and animal. So all living thing shows the growth. So life begins from the single cell. Okay, and the cell grow, that enlarge in the size, then it divide to form the new cells. Okay, life start with single cell, that cell grow, then that cell divide and it make the new cells. So the size of organism increases with increase in the number of cells. Okay, the size of organism increases with increase in the number of cells. The growth of an organism occur in the different stages. Okay, the growth of microorganism occur in the different stages. So first one, that is plants. In the plants, first one there is a seed. When seed is germinate, then small baby plant or sapling. Okay, and then we obtain the big tree or a big plants. Okay, seed grow into sapling. Sapling means small size baby plant. Okay, first one seed. Seed grows into baby plant and then it grows into adult plants. Seed grows into sapling and then into a large tree. And in the animal and the human being, there are again different stages. Okay, so first one क्या होता है animals में? Reproduction. Then after reproduction, next one is animals start to grow. That is the growth. And after growth, after certain stage, there is stability. Okay. So in the animals, first stage, that is animal क्या होते हैं? Reproduce होते हैं. Reproduction में भी two types है, oviporous and viviporous. वो हमें ये चैप्टर में ही सीखना है. So first one reproduction होता है. Then next one they start to grow, and after certain stage, growth stop. That one is called stability. Now there is a difference in the plant and animal. Okay, regarding the growth, can anyone tell me क्या difference है plant and animal के growth में? Type the message or you can give me answer orally. क्या दोनों में growth होती है? Is it clear? First point. Yes, very good. Advik Chaudhary, very good. Okay, दोनों में growth. Plants. No, this is not my point. I want different answer. See, okay, so living things. Okay, living thing shows the growth. Is it okay? ये तो आपको पता है, आप भी पहले छोटे होंगे. Then nursery, KG1, KG2, अभी आप 6 में आ गए. Okay, so living thing में growth होते हैं. ये तो आप सबने देखा है. Okay, so living thing में plants से, animals से. Plants में भी पहले क्या होते हैं? Seed, then sapling, and then big plant. Okay, animal में भी पहले reproduction होता है, then growth, and then stabilization. Now I am in the stable stage, third stage. Okay, now I am in the stable stage, and you are in the second stage, that is growth. Okay, growth stage में. Okay, so what is the difference between plant growth and animal growth? Can I tell? Okay, so in the plant, growth occur throughout the life. Okay, in the plant, growth occur throughout the life. But what about the animal? In the animal, after certain stage, growth stop or less. That is called stability. Now I am in the stable stage.
ओके, नाउ मेरे हाइट भी इंक्रीज नहीं होने वाली है, आपकी देखो डे बाय डे हाइट इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ. इन द प्लांट growth occur throughout the life, and in the animal after certain stage growth stable. Understand point? Very good. So growth is the characteristic of living thing. Growth क्या है? Living thing का characteristic है. Now next characteristic of living thing, that is living thing respire. Okay, living thing respire. ओके, और इसको हम रेस्पायरेशन भी बोल सकते हैं. लिविंग थिंग रेस्पिरेशन करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. नॉन लिविंग थिंग डू नॉट हैविंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड द फूड. नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो. ओके, ये डस्टर है. नॉन लिविंग थिंग डू नॉट टेक ऑक्सीजन. 1 मिनट. ओके, डस्टर है. ग्रो हो रहा है क्या? जितने दिन से क्लास चालू है सेम है ना? 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, एक स्टोन है. ओके, ग्रोथ होती है. सो नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज लिविंग थिंग रेस्पायर. बट before that, you have to compulsory learn the definition of respiration. Okay, आप सबको respiration की definition compulsory आनी चाहिए. Can anyone? Okay, yes, you can type the message. That one is the definition of breathing. Same. Okay. See, respiration. Okay, now I am telling you the definition of respiration. The process of breakdown of glucose with the help of oxygen to obtain the energy, that is called respiration. Very simple language में बताई, बुक में अलग थोड़ी सी सेम है बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. Okay, now learn the definition of respiration. The process in which glucose is breakdown. हमने जो फूड खाया है, ओके, हम जो फूड खाते हैं उसका कन्वर्शन किसमें होता है? ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो एसिड में, फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ओके, सो आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. सो द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज, okay, breakdown of this glucose with the help of oxygen to obtain the energy. And in this process carbon dioxide is given out as the byproduct and water is also formed. So this is called respiration. ओके, आपको कंपल मैं लगे तो फिर से नोट डाउन करती हूँ. मैंने अभी जो बताया सबसे इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन है एंड हर एक को कंपलसरी आना ही चाहिए. किसी ने भी आपको पूछा व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, तो यही taking oxygen in and giving carbon dioxide, that one is breathing, and respiration and breathing is different process. Okay, understand? So first one, breakdown of glucose. Breakdown of glucose with the help of oxygen to obtain the energy, and in this process carbon dioxide is given out and water is also formed, and this is called respiration. Okay, this one is called respiration, or we call it as a respiration. Now what is the meaning of breathing? Okay. Yes. Breathing and respiration is different. Yes. Both are different process. Okay. So taking oxygen in and giving out carbon dioxide out of the body, that one is called breathing. Okay. Oxygen in and carbon dioxide out, that one is called breathing.
breathing and respiration are the different terms. Clear? Is it okay? Okay, so the process by which living organism utilize oxygen to release energy stored in the food eaten by them is called respiration. इससे अच्छा है मैंने सिखाई वो डेफिनेशन इजी है. Okay, बुक में क्या दिए हैं? द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग यूटिलाइज द ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी which is stored in the food eaten by them is called respiration. Respiration and breathing are different. Breathing is the part of respiration. Okay, breathing is the part of respiration. So the process of oxygen in and giving out carbon dioxide is called breathing. Now next one, respiration प्लांट्स में भी होता है, रेस्पिरेशन एनिमल्स में भी होता है. सो फर्स्ट वन दैट इज प्लांट्स एंड नेक्स्ट वन एनिमल्स. प्रोसेस इज सेम. प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ह्यूमन बीइंग आल्सो ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट. सो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, यस. एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं, यस. ओके, एंड रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस इज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आउट. सो प्लांट्स आल्सो रेस्पायर एंड एनिमल आल्सो रेस्पायर. सो ड्यूरिंग दिस yes, that one is different term. Food बनवायची प्रोसेस आहे. That one is different process. So equal me. Okay. Now my point is फक्त सध्या ह्या पॉइंट कडे कॉन्सेंट्रेट करा. Now my point is respiration. Okay, आप रेस्पिरेशन करते हो? आप सब लोग रेस्पिरेशन करते हो? यस. वैसे प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, यस. रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट. So plants and animal both respire. So during respiration, oxygen react with the glucose to break down and release the energy which is stored in the food. Carbon dioxide is produced during the respiration and which is breathed out. So respiration is very important feature of all living things. And respiration is called life process. Okay, respiration क्या है? एक important life process है. So all animal respire, yes, and they have different respiratory organ. सभी एनिमल रेस्पिरेशन लिविंग है. मैंने क्या बोला? लिविंग थिंग रेस्पायर. जो भी एनिमल लिविंग है, जो भी सभी लिविंग है, सभी लिविंग थिंग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन. बट देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज different. Okay, so first we discuss about the plants. So in the plants, okay, on the leaves, yes, okay, plants having the leaves, and on the leaves there are tiny pores are present, and these tiny pores are called stomata. Okay, that one is plural but single raha to usko stoma. Okay, so on the lip there are tiny pores are present, and that one is called stomata, and these stomata take oxygen in and carbon dioxide out. Now ये जो stomata है, on their side then the kidney shaped cells are present and they are called guard cells. Okay, see स्टोमेटा के साइड में दो किडनी शेप स्ट्रक्चर रहता है. किडनी शेप स्ट्रक्चर के सेल होते हैं एंड दे आर कॉल्ड गार्ड सेल. सो व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा ओपन है तभी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट हो सकते हैं, बट स्टोमेटा क्लोज हो गए तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट नहीं हो सकते. So what is the role of this guard cell? Where guard cell is present? Stomata के side में
दो किडनी शेप सेल प्रेजेंट होते हैं एंड दैट वन इज कॉल्ड गार्ड सेल. स्टोमेटा, स्टोमेटा के साइड में किडनी शेप जो सेल है दे आर कॉल्ड गार्ड सेल. What is the role of guard cell? Opening and closing of stomata. Clear? Okay. So plants respire through the tiny pores. They are called stomata, and which is present on the underside of leaves. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Where stomata is present? Stomata is present on the underside of leaves. And जो aquatic plant है उसका stomata कहाँ पे रहता है? Upper side. Okay, so stomata is present on the underside of leaves. Now ये हो गया plants का. Now next one animals, human being. कौन से organ से respiration करते हैं? Lungs. Okay, so most of the terrestrial animal respire with the help of lungs. Terrestrial means those animal which are present on the land. They are called terrestrial. जो एनिमल वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. जो एनिमल्स एयर में रहते हैं दे आर एरियल एनिमल्स. जो एनिमल ब्रांचेस ऑफ ट्री रहते हैं आर्बोरियल्स. Arboreals. Very good, my dear students. Okay, so those animals which are present on the land, they are called terrestrial animal. And terrestrial animal respire with the help of lungs. Have you seen the diagram of lungs? देखिए सबने lungs के diagram देखिए, नहीं देखी होंगी तो आज डाउनलोड कर लो. Okay, so next one, that is fish. How fish respire? With the help of gills. Okay, fish कैसे respire करते हैं? With the help of gills. Next one, earthworm. Earthworm respire with the help of moist skin. Earthworm कैसे respire करते हैं? With the help of moist skin. Now insect, grasshopper breathe through the tiny pores which are present on their body. They are called spiracles. Okay, कैसे करते हैं? Spiracles से. Understand about the respiration process and different respiratory organ. Fastly repeat करती हूँ. Those animal which lives on the land, that is terrestrial, lung से करते हैं. Fish gill से करते हैं. Then earthworm, moist skin. Insect, grasshopper, spiracle, and plants with the help of stomata. 1 minute. Hello. Yes. ग्रुप वर लिंक असेल ना बघ ना, किंवा सरांना कॉल कर, सरांचा नंबर आहे ग्रुप मध्ये. Okay, so like this, different animal having different respiratory organ. Is it okay, dear students, about the respiration? So now I have the duster. ये duster respiration करता है? Non-living thing do not respire. Living thing respire. Okay, so respiration is the characteristic of living thing. Clear? Very good. Now next characteristic of living thing, characteristic number 5, that is living thing move. Okay, living thing move. Okay, next characteristic of living thing, that is living thing move. So except the plants, most of the living things move. Plants are stationary, plants are fixed, but their parts are moving. For example, uska seed hai, with the help of air move ho sakta hai, but originally plants are fixed. Hello. हो कालपासून केली काय स्टार्ट. चालेल, काय हरकत, चालेल, काय हरकत. हो ना, हो, मी सॉफ्ट रिमाइंडर आपलं बोलणं झालं होतं ना, म्हणून सॉफ्ट रिमाइंडर.
चालेल काय हरकत नाही. चालेल काढू मॅथ्सचं का B1 स्टार्ट करायचं का मागच्या वर्षासारखं 3 days इन वीक 14ला स्टार्ट करते तुम्ही झेरॉक्स काढून घ्या. 5 to 6 चालेल Okay. So next characteristic that is living thing move. So except the plant, most of the living thing move. Animal move in from one place to the another place in search of food, shelter, escape from the hunter or by the predator, and for the breeding also, for the reproduction also. Animals move from one place to the another place, but plants remain fixed in the soil. However, part of the plant such as leaves, stem, roots show the movements. Okay, so their parts show the movements. So first one, there are the two type of movements in the plants. Roots, okay, roots of the plant grows towards the gravity, and that movement is called geotropism. Okay, plants move नहीं करते, but plants के part movements करते हैं. They show the moments. For example, root grows towards the gravity, and that one is called geotropism. While stem of the plant grows toward the sunlight, toward the light, and that moment is called phototropism. Is it okay about the living thing shows the moment or living thing move? So this duster is the non-living. I kept the duster in one place. उसको मैंने 6 month 1 year 2 year उसको मैंने मूव ही नहीं किया तो डस्टर एक ही जगह पे रहेगा. So non-living thing do not move. What about the living thing? Yes, a living thing move. Understand? So we discussed the 5 characteristics. Living thing shows the structural organization or cellular structure. Living thing need the food. Non-living thing do not need the food. Living thing grow. Non-living thing do not grow. Living thing respire. Non-living thing do not respire. And living thing move. Non-living thing do not move. Okay, living thing move करते हैं. Non-living thing do not move. So, like these 5 characteristics today we have discussed, and remaining characteristic we continue on tomorrow. Okay, so do you understand these 5 characteristic? Any doubts? आपको सभी कंपल्सरी लर्न कर लेना है. कौन से एनिमल का कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लाइक दिस सभी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लर्न करना है, ब्रीदिंग की डेफिनेशन लर्न करना है, फोटोट्रोपिज्म लर्न करना है, जियोट्रोपिज्म. आज का होमवर्क क्या है? जितने भी पॉइंट्स मैंने आज कवर किए सभी पॉइंट्स ईच एंड एवरी लाइन आपको लर्न करना है. क्लियर? एनी डाउट होगा तो मैं 2-3 minutes मीटिंग में ही हूँ. यू कैन टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स. कितने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस, कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हमने लिविंग थिंग के? 5 points. ओके, एंड दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग थिंग. वो नॉन लिविंग थिंग में नहीं है. सो 10 पॉइंट टेल अस द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ओके, Atikant, now my sound is okay. Nazar Dhane. Yes, Ayan, you continue. Atikant, just show me your thumb. Again, anyone have problem regarding sound? Jitesha, my sound is okay. Just show me your thumb. Shreyash,
Riya Gandhi, on your camera. Riya Gandhi, on your camera. Beta, my sound is okay. मैं audible? Clear ना? आप unmute नहीं कर सकते हो? मैंने सबको mute कर दिया. Is it okay ना? My sound आ रहा था? Do you understand today's topic, Riya? Okay. Arjun. Okay. प्रज्ञेश, मायशा और कौन कौन है मीटिंग में? ओके. अर्पिता, इज इट ओके बेटा? प्रसाद, पारस, तनुश्री, देवेश, माय साउंड इज ओके? डू यू अंडरस्टैंड टुडेस टॉपिक? यस, यू कैन शो योर माइक्रोस्कोप. जितेशा, मैं अनम्यूट करती हूँ, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल भी सकते हैं. ओके, चलो बताओ जितेशा. जितेशा ने भी माइक्रोस्कोप बनाया है. 1 मिनट. चलो, जितेशा ऑलरेडी मेरे संडे साइंस स्कूल की स्टूडेंट है. 1 मिनट है जितेशा. संडे साइंस स्कूल के लेवल्स किए हैं जितेशा ने. 1 मिनट में तुम्हें ये करती हूँ. यस नाउ. यस शोमी, आपने खुद बनाया है? ये तो किसी इसका है ना बेटा? आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया था क्या संडे साइंस स्कूल जैसा? तुम्हारा माइक ऑन करो ना जितेशा. साउंड नहीं आ रहा है जितेशा. नेट प्रॉब्लम है क्या? ओके, यू कैन शो मी, नो प्रॉब्लम. जस्ट शो. ओके, देखो जितेशा ने भी माइक्रोस्कोप बनाया है, वो सबको बता रही है. ओके, स्लाइड कहाँ पे रखते हैं? ओके, वहां पे. लेंस कहाँ पे है? लेंस मिरर. ओके. यस. ये स्मार्टिविटी का बॉक्स लिया था क्या आपने? स्मार्टिविटी का बॉक्स. ओके, गुड, वेरी गुड. कुछ ऑब्जर्व किया वो माइक्रोस्कोप में? अब मेरे पास, मैंने आपको बताया नहीं, ये थोड़ा बेसिक वाला है. इसमें एक ही लेंस है, इसमें 2 लेंस है. ये लाइट माइक्रोस्कोप है. लाइट, ओके, लाइट पे वर्क होता है. एंड और एक माइक्रोस्कोप है मेरे पास. ये मैंने आपको बताया. देवेश, ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ. ओके, सो हैव यू सीन माइक्रोस्कोप? यस. सबने देखा माइक्रोस्कोप? Yes. बेटा अभी लाइट नहीं ना सब. स्लाइड भी हमें एडजस्ट. मैं आपको डेफिनेटली एक दिन, आप संडे को मॉर्निंग को, नहीं तो आफ्टरनून को आओ, सबको मैं एक दिन बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, मेरे पास ये वाला है, इसमें सेल भी डालने पड़ेंगे. ये सेल बहुत ओल्ड है एक्चुअली. एलईडी ऑन ही नहीं होगा. आणायचा प्रश्न नहीं. I don't have sufficient time now. Okay, so is it okay, my dear students? Yes, ma'am. Bye. Bye. Yes, ma'am. Bye, ma'am.